Okay, perfect. Let's kick off then. So thank you so much, Hassan, for joining first of all, and Assalamu alaikum everyone. रमज़ान करीम। उम्मीद है कि रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और जो अभी करंट सिचुएशन क्वारंटीन में रमज़ान बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस होगा ना। हमने कभी ऐसा ज़िंदगी में देखा नहीं था रमज़ान, वो भी कोविड-19 के ज़माने में। हमने अल्लाह से यही दुआ है कि इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा रहे, ये पैंडेमिक हमारे सरों से गुजर जाए और हम अपने हाँ नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएं। हाँ बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को लेके हमने एक चिपकू.com के प्लेटफॉर्म से हमने रमजान ट्रांसमिशन रमजान आस्क मिशन हमने स्टार्ट किया है। और आस्क मिशन का जो कॉन्सेप्ट है कि इट इज अ सीरीज ऑफ एपिसोड वी विल बी टॉकिंग अबाउट न्यू नॉर्मल। हम ये कहते हैं कि हमारा नॉर्मल लाइफ वापस मिल जाए, मगर कोविड-19 जब जाएगा आफ्टर अ मंथ और कपल ऑफ मंथ्स टाइम, तो एक ट्रेल छोड़ देगा जिसकी वजह से हमारा नॉर्मल चेंज हो जाएगा न्यू नॉर्मल में। हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। हमने सोचा नहीं था कि सोशल डिस्टेंसिंग होगी, क्वारंटीन होगा, वर्किंग फ्रॉम होम इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बिल्कुल हमने फ्रॉम मार्च टिल नाउ हमने लाइफ में बड़ी मेजर चेंजेस देखी हैं जो हमने पहले नहीं देखी थी। तो हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो जो पहला टॉपिक आज हमने चूज किया है वो रिमोट वर्किंग है। क्या रिमोट वर्किंग विल बी द न्यू वर्ल्ड, न्यू एरा, इट इज द न्यू नॉर्मल? हम इस पे बात करेंगे। और इस रमजान आस्क मिशन की जो सीरीज और जो एपिसोड्स हैं, इनमें हमारे पास हमेशा गेस्ट मेंटर्स होंगे जो कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और नॉलेज हमारे साथ शेयर करेंगे। इस आस्क मिशन की जो सबसे खास बात है, जो ब्यूटी है, वो है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इसे रन करें। हाउ? आप क्वेश्चंस पूछें। आपके माइंड में जो क्यूरियोसिटी कि भाई लाइफ होगी कैसे, दुनिया में बाकी जगहों पे कैसे जिंदगी गुजारेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या फ्रेमवर्क बना रहे हैं, क्या ऑपरेटिंग मॉडल होगा, क्योंकि जो चीजें यहाँ पे ड्राइव होंगी उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बाकी पूरी दुनिया में होगा। तो हम इस चीज को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, दैट्स द वे वी विल बी शेयरिंग। तो आज हमारे जो फर्स्ट गेस्ट हैं वो है हसन कुरैशी। आपने इनकी वीडियो हमारे फेसबुक के पेज पे देखा होगा, आपने इनका जो ब्रीफ बैकग्राउंड है भी सुना होगा। माशाल्लाह वन ऑफ द ग्रेट मेंटोर्स हैं माशाल्लाह, एज अ ह्यूमन, एज अ प्रोफेशनल माशाल्लाह, ऑलवेज विलिंग टू शेयर स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। सो नाउ लेट मी सेट द सीन फर्स्ट। हम ये कहते थे और हमने सुना है और अब तक जो देखा भी है कि इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न जो बिजनेस है, आज की दुनिया की जो हम बिजनेस कर रहे हैं, द सिंगल बिगेस्ट चेंज इन वर्किंग प्रैक्टिस इज रिमोट वर्किंग। दुनिया चेंज हो गई है और सबसे खास बात है कि ये ओवरनाइट हुआ, रातों रात हो गया है। लाखों लोग, मिलियंस के करीब शिफ्ट हो गए हैं वर्किंग फ्रॉम ऑफिस टू वर्किंग फ्रॉम होम, मींस फ्रॉम गैराज, फ्रॉम किचन, फ्रॉम बेडरूम। ये लाइफ हो गया है। वर्क प्लेस और लिविंग प्लेस को कोई डिफरेंस रहा नहीं, थिन लाइन हो गया है। According to research, 140% का इंक्रीज हुआ है रिमोट वर्किंग का। राइट नाउ 63 to 65% यूके की, यूएस की जो कंपनीज हैं उनके पास रिमोट वर्कर्स हैं। इन इंग्लैंड में, यूके की अगर मैं बात करूं तो रफली 85% के लोग वर्किंग फ्रॉम होम कर रहे हैं। फॉर अस वर्किंग इट वाज नॉर्मल टू गो ऑफिस, तैयार होना, ट्रैवलिंग करना, 1 घंटा 1.5 घंटा ऑन एंड हाफ रफली लगाना ट्रैवलिंग में, ऑफिस जाना, वहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना, वहाँ के टीम डायनेमिक्स में इन्वॉल्व होना, कॉफी पीना, मिलना, ये सब नॉर्मल था। मगर अब नॉर्मल क्या है? स्टे एट होम, वर्किंग फ्रॉम होम। जो फैमिलीज हैं वो इतना स्ट्रगल करते हैं कि बच्चों को संभालो, बीवी को संभालो, खुद को संभालो, खाओ पियो, सब कुछ काम करो, साथ में काम भी करो। डिफरेंस रहा नहीं कि कब ऑफिस का टाइम होगा, कब घर का टाइम होगा, राइट? ऑफिस में जो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कंसर्न हो गया है कि वो माइक्रो मैनेजमेंट कैसे करें, मींस आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अब कोई है नहीं ऑफिस में, तो हम इसको अपने टीम को कैसे एम्पावर करें? तो इन चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे कि अब लाइफ जो थी उस माइंडसेट से हम कैसे निकलें और ट्रांजिशन कैसे करें कि हम एक न्यू नॉर्म में वापस आ जाएं। Roughly 77 to 80% employee across globe, they did a really good job by handling the remote work transition, जो transition हुआ उनका। जो की फैक्टर्स देखते हैं हम, जैसे कि जब हम ऑफिस में काम करें या घर से काम करें, 3 की फैक्टर्स होते हैं कि ट्रूली इंगेजिंग हो, एफिशिएंट हो एंड प्रोडक्टिव हो। ये चीजें अगर आप अचीव कर रहे हैं तो दैट्स फाइन, मगर इसको हम एक
ऑपरेटिंग मॉडल में कैसे लेके आए, लेट्स टॉक विद हसन। अपनी टीम को मैनेज करता हूँ यहाँ से, घर से बैठ के, जब ये सोचा भी नहीं था। मैं वर्कहॉलिक पर्सन, हमेशा ऑफिस जाने को प्रेफर करता था, 6 o'clock पे निकल जाता था कि जाओ ऑफिस चलो, मगर वो टाइम नहीं रहा, राइट? आपकी लाइफ में भी ऐसी कुछ चेंजेस होंगे, तो व्हाट योर थॉट्स, व्हाट यू हैव सीन सो फार, अगर एज अ प्रोफेशनली आपके अगर पूछूं? Rehan, thank you very much for taking me online. It's always lovely to join the Chipku, the platform, and address the concerns of the mentees, first of all. So thanks for taking me online. Remote working, आप सही कह रहे हैं, काफ़ी चीज़ें change हुई हैं in the last probably 6 weeks. At least I think it's around 6 to 8 weeks. That's not more than that. मेरा जॉब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे I always had the flexibility to work from home, so I used to do it actually once in a while. So nothing dramatically changed, लेकिन what changed actually for me is basically कि other teams started working from the home as well in the same organization now. तो मुझे जिन लोगों से वास्ता पड़ता था, जिनसे मैं जाके मीटिंग्स मुझे ऑनलाइन वो ऑन साइट करनी पड़ती थी, फेस टू फेस, I don't have to do it anymore. All I have to do is basically just set up an appointment actually on the online. और ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ही माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, स्काइप पे, जूम पे, उन चीज़ों पे जो है चीज़ें जो हैं वो आगे मूव हो गई हैं. जहाँ तक बात पड़ती है, जो आई थिंक वन वैलिड पॉइंट यू गाइस हैड इज बेसिकली अबाउट कि माइक्रो मैनेजमेंट, लोगों का जो रवैया है कि लोगों को मैनेज किस तरह किया जाए, टीम को मैनेज किस तरह किया जाए. My personal view is basically I think we are moving towards a society where the trust has to be developed within the team. It's not about कि बंदा 8 बजे 9 बजे शुरू हो and he gets off actually at 5. Things have moved on कि आपको, it's more about what's your responsibility and how you basically take the responsibility to deliver the workload. अगर आप अगले अपनी परफॉर्मेंस में शो नहीं करते हैं कि आप अपना वर्कलोड अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, डजंट मैटर कि आप 8 बजे ज्वाइन करते हैं, 9 बजे ज्वाइन करते हैं, या ये पूरी रात बैठकर अपना काम करते हैं, ऑल इट मैटर्स यू डिलीवर व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू. तो मेरे ख्याल में माइक्रो मैनेजमेंट, आई एम नॉट एक्चुअली, आई हैव नेवर बीन इन अ फेवर ऑफ द माइक्रो मैनेजमेंट. आई हैव ऑलवेज बीन इन द फेवर ऑफ गिविंग द having the trusted relationship with the employee and let them do their work, so that at least actually they start actually making an impact on your team as well as for the organization. Makes sense. Thank you so much. Really important बात आपने कही कि अगर हम बात करें कि हर इंसान डिफरेंट है, राइट? इस वर्किंग फ्रॉम होम ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने टाइम को खुद अपने हाथों में लेके मैनेज कर सकें. हमें मुझसे ज्यादा या आपसे ज्यादा आपके बारे में कोई नहीं जानता, सेम है अक्रॉस ग्लोब, यही है. तो अब सम टाइम मुझे होता था कि मैं घर में रात में ज्यादा इजीली काम कर सकता हूँ, माइंड फ्रेश होता है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी में मिल गई. अब ये जो अब बस एक चीज जो है कि वो डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम कि अपने घर को भी टाइम दें, अपने काम को भी टाइम दें. जैसे आज की दुनिया में पहले था कि जैसे आपका पेट, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, कोई एक थिक लाइन था, डिफरेंस होता था, मगर वो डिफरेंस खत्म हो गया. एज आई सेड बिफोर कि वर्क प्लेस और होम प्लेस मोर लेस सेम हो गए. तो वो उस डिफरेंशिएट को हम वो टाइम कैसे मैनेज करें. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम वो टाइम कैसे मैनेज करें, वो प्रोडक्टिविटी कैसे लाएं. तो हम हाँ, ऐसे सही है रिहान, ये सही कह रहे हैं. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक पीपल, जो उन लोगों के लिए जो खास तौर पर जो who never used to work from home earlier, उनके लिए ये बिल्कुल एक नया चैलेंज है. और ख़ास तौर पर when the kids are working, actually when the kids are at home as well, तो it's always a challenge. How do you spare time actually for the work, and how do you make a distinction between the work time and your own time as well. तो उसमें मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आई थिंक आई ट्राई टू abide with my own time. अगर मैं सुबह 8 बजे शुरू कर रहा हूँ, 7:30 बजे शुरू कर रहा हूँ, तो मैं I usually try to start with this around the same time. I do like to have the dedicated place for the work. You cannot move around in the house with your laptop and try to work from the different places, because that never works. तो मेरे ख्याल में सबसे main important चीज जो है वो stay with your timings. जो आपका schedule, जो work hours आपके चल रहे हैं, stay with those timings. And then the other important thing is basically to have the dedicated place. It could be actually your own room, but try to be actually जहाँ आप comfortable हो सकें, जहाँ आप concentrate कर सकें अपने काम पे, जहाँ आपके पास at least आपके पास सारी चीजें available हो to produce your work.
to produce the output actually. तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें काफ़ी important होनी चाहिए कि आपको as close to possible कि अपने work routine के साथ किस तरीके से आप stay कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. Makes absolutely makes sense. So एक और क्वेश्चन जो पूछा चाहता है कि do you think कि organizations यानी fully prepared थी इस new norm को accept करने के लिए? नहीं, it तो never sudden was. change को कैसे मैनेज करती हैं कंपनी तो में? क्या चेंज हुआ है? हाँ, इसमें मेरे ख्याल काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं पिछले दिनों में. मेरे ख्याल में आपने देखा होगा कि how the Zoom actually picked up in the last couple of months. It became a billionaire company just right in the few weeks time, in the few months time. इसी तरह जो Microsoft Teams और Microsoft Skype के जो ट्रैफिक जो बड़ी है उनकी, I think it basically I was reading about the Microsoft. I think it went up around 750 times actually that they were doing in the earlier this year. तो मेरे ख्याल में ट्रैफिक का वॉल्यूम इस कदर बढ़ गया है, इस कदर टेक्नोलॉजी में चीजें बढ़ गई हैं कि people just move from going into the physical world of having meeting up with the people to just switching everything actually on the remotely working on the maybe on the through the different platforms. So technology played a really important role actually in this one, and we were lucky कि पहले जब मुझे याद है कि back in 90s and early 2000s every technology was based on my background was actually from in the network security side, so I can tell you a lot of things were based actually on prem, right? कि टेक्नोलॉजी में आपने वहाँ पर ही जो है आपने स्टोरेज की आपकी कैपेसिटी है, एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है, आपकी VPN की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है, आपके नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स की स्पेसिफिक कैपेसिटी है. When we moved actually, and we were lucky this time कि everything was dependent on the cloud. Mostly the social media platforms are all cloud based. So like the Zoom, and basically you go for the Skype, you go for the other platforms, they're all the cloud based. So people didn't have to do the hard work of upgrading their own the hardware and the software in their own companies. They were reliant on the cloud services, and the cloud services, I think they did a fabulous job actually doing it. Some of them had some hitches, to be honest, but given the expectations, like going from to 750% of your traffic volume, I mean, you cannot expect it in any other company who could cop up with those kind of stats. So I think they did a fabulous job, and we were lucky that we didn't have we had the right technology and we had the right cloud services to back us up actually in this time when we needed it at the most. बिल्कुल सही. Environment भी चेंज हो गई ऑर्गेनाइजेशन को. अब हमारे जो यूजर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स होंगे या फिर जॉब्स के लिए लोग ढूंढ रहे होंगे या फिर स्टूडेंट्स हैं, क्या रिकमेंड करेंगे आप कि क्या स्किल्स होने चाहिए कि इस नई दुनिया में न्यू नॉर्मल जो है उसमें क्या skills होने चाहिए? So Ryan, it's a very good question. Thing is, basically, I think everybody has their goals. कोई अगर जिसने डॉक्टर बनना है उसने डॉक्टर ही बनना है भाई. उसके लिए वो अब मतलब मैं ये नहीं कह सकता COVID-19 के बाद जो है वो आके कोई टेक्नोलॉजी में कोई that's I mean your goals are set, but the thing is talking about the skills. That's a very important question. कि how your skills change. That's an important thing to know. अब आपने रिमोट वर्किंग में क्या स्किल्स आपके पास होने चाहिए? यू नीड टू नो हाउ टू यूज बेसिकली द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. यू नीड टू अंडरस्टैंड दोस प्लेटफॉर्म्स. यू नीड टू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग कि हाउ टू मैनेज योर वर्कलोड remotely, as well as interacting with the people. सोशल मीडिया के किस तरीके से वो किस तरीके से आपने जो चलानी है. तो मेरे ख्याल में it did change the way of working, but how people actually उनके जो goals हैं, उनके जो dreams हैं, that never changes. I think that basically those things should be. अगर एक बंदे को जो चीज एक पहले से पसंद है, if he is a footballer, if he is a sportsman, if he is a doctor, wants to be a doctor, I think their goals should stay the same. How they achieve those goals, that might change a little bit. So, what do you think? What is the biggest concern of working remotely? क्या है? क्या इशू है जिसको हम जो मेजर कंसर्न होता है? फॉर मी अगर मैं देखूं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि मैं बैलेंस कर सकूं. क्या कब मेरा डाउन टाइम है, कब ऑफिस को मुझे देना है, कब मैं रिलैक्स हूं कि जब होगा टाइम मैं कर लूंगा, तो मुझे देखने वाला नहीं है.
I think, Rehan, that's a very good point. So basically, I think the major point is basically our work life has been blurred with our personal life now, because Hmm. पहले तो होता था हम लोग ऑफिस से वापस जब आते थे we could switch off. अभी वो switch off और switch on वाली जो चीज है, there is nothing like that. So I think the both the lives have been blurred together. I think it's to be honest, my personal life, मैं अगर अपनी life देखूं तो मुझे sometimes I have to work from home on the over the weekends as well, and maybe during the nights, because you are doing quite a lot actually. The expectation goes up when you basically started producing the other things as well. But the thing is basically when you both the lives actually merge together, how you keep the distinction in between the two lives, I think that's the major thing. I still try to keep my calendar up to date so that I can assign the workload according to my calendar. कि मैंने सुबह के टाइम 2 घंटे इस चीज पे काम करना है, शाम को दोपहर को 3 घंटे मैंने इस चीज में काम करना है. If I can track it my calendar wise कि ये चीजें मैंने इस दिन पे करनी है, and try to finish up by 5 o'clock, half five, I think that's the biggest achievement. But that's to be honest, that's sometimes it's quite idealistic to basically to finish up by 5 o'clock. Sometimes it never happens, especially जब आपके kids हों, जब आपके पास और चीजें हों, तो and then you have to run around sometimes. तो during that time, you basically, I think it's acceptable to spend some hours actually during your off-peak hours. Could be later on when the beds and when the students your kids go to bed, you can always work actually in an hour, actually half an hour during that time, so that you can concentrate on some specific tasks. So to be honest, there is no. We can always try to stick with the 9 to 5 or 8 to 5 times, but it's never usually. It could never be possible sometimes for most of the families as well. So I think that is a little bit of a challenge. क्योंकि आपकी बात सही है, इसमें कुछ लोग आई थिंक इज हैविंग द मीटिंग्स विद स्पेशली द ग्रुप्स के आप जिन चीज़ों में आपकी टीम के साथ मीटिंग्स हों, आप जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं ऑफिस में, यूजुअली आप सेट अप द मीटिंग्स विद देम, बट जस्ट टू मेक श्योर दैट यू नो कि there is a distinction between the introverts and the extroverts, right? So introverts are basically people who are introverts. They like to work more actually, and they are, I think, with with the COVID-19 situation, I think it is a big benefit for the introverts. They can actually start focusing on their work rather than wasting time on the social media and socializing with the people. But for the extroverts who really love to catch up with the people and now actually want to know, okay, what's going on in the company, having a chit chat here and there and try to understand what is going on around the company, I think those people need to set up the daily calls and having the regular conversation around it, because otherwise it could have a negative impact on that specific person. घर से काम करते हैं तो सिक्योरिटी के बड़े कंसर्न होते हैं। तो हसन, आप बताएं क्या करना चाहिए? हमारी ऑडियंस को क्या आप रेकमेंड करोगे आप? सिक्योरिटी के आई थिंक you're right, try to use I mean जो बेसिक प्लेटफॉर्म है वही आपके जो लैपटॉप में आपके जो प्रॉब्ली अगर आप घर से काम कर रहे हैं on your machines, having the baseline of security in place, it could be the antivirus system, it could be the firewalls that are in place, you have to have the secure login credentials. जब आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, आई नो कि जूम के बारे में काफी चीजें कही गई हैं अभी पिछले दिनों, बट दे टुक आई थिंक अ बिग स्टेप टू mitigate the issues, right? तो अभी उन्होंने भी काफी fixes की हैं, patches की हैं उसके बारे में, and they are trying to address the security concerns. Microsoft के जो technologies हैं, usually they are quite secure, but when you do, I mean, I think one thing I would like to highlight कि जब भी आप लोग अपना social media का platform use करते हैं, try to use the secure password, try to use the multi-factor authentication if possible. That will always help to keep your profile safe. क्योंकि जब भी आप cloud में जाते हैं, जब social media में जाते हैं, तो आपका there is always a chance to have your compromised credentials. And one thing I would like to highlight is basically not to use your same passwords actually over and over again for the different websites and the different technologies. So I think that will keep yourself. So baseline security, I think those are the baseline securities are going to be all the from your identity management side, your credentials कि आप वो secure होने चाहिए. आपका लैपटॉप में कोई जो है जो इस तरह की malware कोई उसको prevent करने के लिए कोई software अच्छा होना चाहिए. Firewalls all need to be in place for doing that kind of thing. And I think जो अभी बड़े platforms हैं, they always raise their security
पैटर्न एज वेल। तो अभी जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, AWS हो गया, और इस तरह के जो बड़े गूगल हो गया, इनके अपने जो सॉफ्टवेयर हैं दे आर ऑलवेज वेरी सिक्योर एज वेल। तो व्हेन यू यूज देम आई थिंक यू ऑलवेज हैव दैट बेटर comfort level on using that kind of platform. You have to be careful for your credentials, but their platforms are usually quite secure. थैंक्स हसन। हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, एक और क्वेश्चन है कि व्हाट स्किल्स वन शुड हैव फॉर रिमोट वर्किंग। तो जस्ट अभी हमने इस पर बात कर चुके हैं, अभी हमने 5-10 मिनट्स पहले इस पर बात की है कि हमारे पर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि हमारे जो काम, हमारा जो स्केड्यूल है, जो मीटिंग्स हैं, जो टाइम फ्रेम है, उसको हम अपने इस लिहाज से मैनेज करें कि हमारी प्रोडक्टिविटी किस वक्त बेहतर है, सुबह में या इवनिंग में। एज फार जब हम ऑफिस में जब काम करते हैं तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोगों को अपडेट करना, लोगों से मीन्स अपनी टीम को, ताकि कोई चीज़ वो ना रहे, कोई डिस्क्रिपेंसी ना रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट इज सो क्रिटिकल एज फार एज स्किल्स इज कंसर्न। प्रोएक्टिवली हमें अपने कामों को, दूसरों की डायरीज को पहले चेक कर लें कि उनकी डायरीज में कोई टाइम स्लॉट है या नहीं है हमारे पास। टेक्नोलॉजी से फुली अवेयर है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस वक्त हमारे पास है। एज आई सेड बिफोर कि हमें फुल प्रोडक्टिविटी लेने के लिए और एफिशिएंट बनने के लिए अहेड ऑफ द गेम वाली बात है कि हमें प्रोएक्टिवली चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। कोई एज आप हसन, और आई थिंक स्किल्स आपकी वही हैं, आपकी जो बेहतर आपने जिसमें करनी है। टाइम मैनेजमेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आपके डेडिकेटेड वर्क स्पेस होनी चाहिए जिसमें आपने चीजें आपने करनी है। आपका यू नीड टू प्रोवाइड द राइट टाइम टू योर फैमिली एज वेल एज टू द वर्क। तो हाउ यू मैनेज इट दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपकी बेसिकली हाउ यू कीप, आई थिंक कम्युनिकेशन विद योर टीम मेंबर्स इज गोना बी क्वाइट इंपॉर्टेंट, सो दैट यू कैन एटलीस्ट दे नो व्हाट यू आर वर्किंग ऑन एंड व्हाट दे आर वर्किंग ऑन। तो वो जो एक प्रॉब्ली वो जो चीजें जो अच्छे, आई थिंक एनी प्रोफेशनल पर्सन शुड हैव दोस काइंड ऑफ स्किल्स एक्चुअली मूविंग इन प्रोग्रेसिंग फॉरवर्ड। हाँ जी, तो वही स्किल्स वही हैं। आई थिंक इट्स बेसिकली द वे ऑफ द थिंग्स हैव चेंज अ लिटिल बिट, बट ओवरऑल द स्किल्स यू नीड टू हैव टू प्रोग्रेस, they are the same. Thank you so much, Hassan. Really appreciate. It was really great to have you. हमारा आज का सेशन यहीं पे हम खत्म करते हैं। आपके जो बाकी क्वेश्चंस हैं हम उसको ऑनलाइन हम हसन से कंसल्ट करके आपको उसके आंसर्स देंगे। Thank you very much for having me. Thanks, bye bye.